कितने लोग हैं? सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति 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 हरि ओम। तो आज का जो पोर्शन है वो भी स्वामी ब्रह्मानंद जी की टीचिंग्स में से है, इटर्नल कंपेनियन में से है, बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत प्रैक्टिकल है, और इसकी समरी आज इतु घोष करेंगे जी। प्रणाम महाराज जी। नमस्ते। Now I start my summary. This topic is from Swami Brahmananda, the eternal Brahmananda's the eternal companion. Here Swami Brahmananda is answering to the questions asked by one of his advanced aspirants, which are very important and useful for all of the aspirants like us. Now, Maharaj has said that Swamiji used to say that Kundalini should be lifted higher, otherwise lower passions like anger, lust, etc. disturb much. Madhura or Shakhi Bhav sadhana amongst Vaishnavites is very dangerous for unfit persons who may end up with lecherous acts. Meditation is not possible until all sorts of evil passions come under control and do not allow them to make an impression upon the mind. That is the greatest penance. Now, for the religion, tranquility of the mind is must, which comes through meditation. So, tranquility and meditation should go together. He says not to have bargain in love for Sri Ramakrishna, otherwise the intensity is reduced. Now the question, devotee asked what he meant by puja. Is it external puja? Maharaj has explained here how to do external puja, mental puja, japa, meditation, and its various stages. He said, mental puja is better. In meditation, imagine Ishta as effulgent consciousness, but not material, in which everything is shining. This will lead to realize the formless and infinite form of the God. Imagination in the beginning will lead the aspirant make more awakened and feel the presence of God, the divine. Then he will come to realization and the world of matters will appear as unreal. This is Savikalpa Samadhi. The next is Nirvikalpa Samadhi, in which the realization of something beyond thought and speech, everything is lost in infinite, where there is no seeing or hearing. Once having this state, mind does not want to get down. It comes with great effort. So so often after this samadhi, one leaves his body, just like breaking the last pot with the reflection of the sun and left with no eye consciousness. Some problem? Ituji, there is some by Sri Ram. Internet is not working, I think.
I think it's okay now. Yeah, okay. She is not here. Okay. Answering the question, he said, test of bliss is only a help. It needs favorable wind. It helps this way. Question. Do different form of rituals and worships of gods and goddesses mean anything special? Maharaj said that people are of different temperament and inclination, so require different sadhanas and worships. Hence, the scriptures prescribed 4 principles: the practice of Brahma consciousness, meditation, second meditation, third japa and prayer, fourth external worship. The best discipline is Brahma consciousness. Second is meditation, being aware of God and oneself. In deep state, perceives the holy form. Here, no japa and prayer. Third is japa and prayer. Fourth is worship of symbol. Different forms of worships of gods and goddesses are creations of human mind, which are the stages of evolution of human mind towards spirituality. As the mind becomes finer, joys in gross and secular diminishes and get pleasure in meditation. All the experiences the mind gets remains there as memory, not lost. One must follow the gradual path marked by our seers in the past. Now, question: what to do when harmful thought rise in the mind? Answer: by repeated effort, impress the idea on the mind that this thought is extremely harmful and will ruin you. Once impression is stamped, thought will vanish soon. Mind is a wonderful thing. Whatever taught, it will learn. Ideal should be chosen first. It should be God only and start striving. Remove the veil of Maya, which is hard but possible. Question: how to distinguish between the vision of God and hallucination? True vision of God can be distinguished instinctively as it has a lasting bliss. Question: what is the necessity of mudra and other rituals in formal worship? Internal troubles are very powerful than external ones. These asans and mudras help in puja. On the question how to worship Guru Maharaj, Guru Maharaj said to worship Guru in the heart center and merge him in the Ishta. Then to begin repeating mantra to meditate on his blessed form. Now from the topic Holy Company. Now the first question is how to turn mind to God. Maharaj said by Holy Company, remove doubts and confusions by discrimination. One should observe, get instructions and follow in life with the help of brahmacharya and sadhana. One should listen to them attentively and retain in memory. Reading Gospel of Sri Ramakrishna and other scriptures and living the life accordingly. As you read more lights will be found. Seeking both God and pleasure can never go together. According to Sri Sankara, human birth, first human birth, second desire for liberation, third holy company are rare. Now question, which of the two to be followed?
Again, problem with her phone. Or sorry, company of holy men. इंटरनेट प्रॉब्लम Yes. अब ठीक है? हाँ ठीक है चलिए, ये हाँ, ठीक है। अच्छा, आपका हीटर जल रहा है तो हीटर बंद कर दीजिए। हीटर वगैरह है इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस तो बंद कर दीजिए। अच्छा, question. Which of the two to be followed, a holy company or solitude? When a man has progressed in spiritual life, he can go for solitude without danger. Company of holy men will leave deep impression on mind and benefit practically, which is not possible but any other by any other means. Question. Is it not enough to pay only visit to holy men? The answer is never. One must ask them frankly about their problems and get solved by them, and model your own life seeing them. Once established in meditation, one can know the sweetness of bliss. इतू जी अपना वीडियो बंद Floating करके in an करिए। speak about your instate can हमारा क्या बंद करेंगे? हाँ ठीक किया आपने, वो वीडियो बंद कर दिया, अच्छा किया। मे बी नाउ वी कैन लिसन बेटर। ठीक है। Is it not possible enough to pay only visit to holy men? The answer is never. One must ask them frankly about their problems and get solved by them, and model your own life seeing them. Once established in meditation, one can know the sweetness of bliss, feeling as if floating in an ocean of infinite bliss. He said not to speak about your own sadhana, which creates hindrances. Instead, can discuss with the experienced or advanced sadhakas or people of the same temperament who can provide with valuable hints. He says that the life is very short and many things to be done within this short time. Death is inevitable and may come any time. So one should finish all the work and be ready. Shake off fear, use best of this present life, and become the eternal companion of God. Only through the strength of God alone who can cut off the meshes of Maya and be free. For spiritual practices, a regular routine meditation, japa, study, and sleep with nishtha is necessary. To control the mind and to maintain it, instruct to the mind to observe and follow it. Get a glimpse of God and finite bliss. Pranam Maharaj. Okay, thank you. So, I think actually everyone must do a little summary of this article. There are so many practical hints about sadhana have been given here. And as a matter of fact, ये किताब हमने इसीलिए ली है इटर्नल कंपेनियन कि ये साधना से संबंधित है और इसलिए हमको कॉन्स्टेंटली साधना कैसे करना चाहिए we will get this boosting. So Itu, now ask your questions also so that you are free. Okay. Maharaj, my first question is, then from the text, then again, it is not desirable to give expression to our inner feelings. So what is these inner feelings? No, not to express what you think of God, our love for God,
our weaknesses. These are the things जो हमारी साधना से संबंधित, all the things which are related to sadhana, they are very personal things. I am not Sure. able to love God, or I am getting God. These I are the got today. happiness. Today I had a nice meditation, or today I was very much disturbed. So those things, these are the personal things which you should not talk to others. You may talk to Guru rarely, personally, but otherwise you should not talk to others. That is the point. Okay. Okay. My second question is, the best discipline is the practice of Brahma consciousness. So now question is how to practice this discipline. अच्छा देखो ये जो है ना ये उसको the whole पूरा एक there is a full passage. तुमसे first is Brahma consciousness, then second is meditation, third is जी. chanting, etc., and fourth is ritualistic worship. So these are the four, and the famous shloka is Uttamo Brahma Sadbhava Dhyan Bhavascha Madhyamah Japa Stotro Adhumo Bhavo Bhaya Puja Adma Atma. यानी चार लेवल है. Best is to remain constantly thinking of Brahman, which is very difficult. Oh. Yes, that is the best. Then Oh, second okay. high So Brahman means, lower level is dhyan bhava, dhyan meditating. so Third lower, is Brahman means even to Sri Ramakrishna, about no, Sri no, no, no. Ramakrishna. This is a general statement. It is not about Sri Ramakrishna. This is general statement about all sadhakas. Prathama, highest is to remain constantly in thinking of Brahman. That is the highest level of individual sadhana. Second, lower level is meditating. Third level is stotra, japa, stotra ityadi. And higher lowest level is bahya puja, external worship. और उसको रिपीट उल्टा उल्टा करो तो क्या है? प्रथमा प्रतिमा पूजा, जप स्तोत्रादि मध्यमा, उत्तमा मानसी पूजा, सोहम पूजा उत्तमोत्तमा. प्रथम पूजा है बाह्य पूजा. फोटो है उसको आप फूल चढ़ाओगे, दीपक जलाओगे, आरती करोगे, ये सब हुई बाह्य पूजा. हम सब लोग करते हैं, छोटी सी हमने श्राइन बनाई है, उसमें करते हैं. जप स्तोत्रादि सेकंड, उससे सेकंड लेवल है जप स्तोत्र, जप स्तोत्र इत्यादि करना चाहिए. थर्ड लेवल है, उससे हायर है ध्यान, और हाईएस्ट है ब्रह्म का चिंतन करना. तो ये चार लेवल हैं जो हम किस लेवल पे हैं उस लेवल पे रह के इसको करना चाहिए. अब समझ में आया? जी नहीं, मैं ये पूछ रही हूँ कि ब्रह्म कॉन्शियसनेस भी मैं ठाकुर को ही केवल सोचूं, फिर भी तो वही एक ही बात हुई. ठाकुर को खोजो, ठाकुर तो ब्रह्म ही है, ये भाव से रखो ना. ठाकुर जी, अपने जी, ईश्वर का जी. चिंतन करो. और दूसरी जी, एक जी. वो भी है रोगी नारायण, रोगी में नारायण. जो ब्रह्म कॉन्शियसनेस का अर्थ है रोगी को नारायण समझना. पुत्र स्त्री भाग्य सारे जो हिंदू धर्म जो है इस ब्रह्म सद्भाव पे ही आधारित है. सर्वत्र ब्रह्म दर्शन करना. तो स्त्री हो, पुत्र हो, मित्र हैं, सबके सब ब्रह्म है, इसको लेकर करना. और मतलब जैसा मैंने अभी कहा चार लेवल है, उसको भी करना. जी, मतलब ये तुम्हारा सोचना प्रश्न कि क्लियर सब हुआ? में ब्रह्म है इतना, अभी तो हाँ, किसी सब में में ब्रह्म ब्रह्म. ये स्वामी सोचना विवेकानंद ने खाली. कहा ना, हाँ. रोगी भी नारायण है, डॉक्टर भी जी, नारायण जी, है. जी. ठीक है, ठीक है. इसे प्रणाम. ओके, ठीक है. हाँ अच्छा, जी, प्रणाम महाराज. अच्छा. एक मिनट महाराज जी, यानी हाँ. जो आपका उससे ये मैं समझ रहा हूँ कि हमने इस संसार के अंदर हर एक में ईश्वर का भाव देखना. हाँ, That's हाँ, it. हाँ. बस राइट जी. प्रथम सुनो, एक तो है ये देखना, दूसरी ये ब्रह्म सद्भाव का दो मीनिंग हुए. एक तो है ध्यान की समाधि में केवल ब्रह्म का चिंतन करना, और दूसरा उसका अर्थ ये भी हुआ कि सर्वत्र ब्रह्म देखना, आंखें खोल के भी ब्रह्म को देखना. तो हमारे जानवर आया, गाय आया, कुत्ता आया, उसको भी ब्रह्म देखना. रोगी आया, मित्र आया, उसमें भी ब्रह्म को देखना. महाराज जी, अब इसमें तकलीफ हमें कहाँ आती है कि हम ये देख सकते हैं कि तेरे में भी ईश्वर देख रहा हूं मैं, और इसमें भी देख रहा हूं मैं, हर व्यक्ति में ईश्वर देखता हूं, और न किसी के प्रति गलत भावना रखता हूं. ये मेरे में व्यक्तिगत इंसल्ट हो गया है. लेकिन अपने आप में ब्रह्म को देखना इट्स वेरी वेरी डिफिकल्ट. दैट वी फाइंड. ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हाँ, दैट्स
ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ध्यान के समय अपने हृदय में भगवान का, अपने इष्ट का चिंतन डेफिनेटली करना चाहिए, और चलते फिरते काम करते हुए भी ये सोचना चाहिए कि भगवान ही मेरे हृदय में बैठ के करा। ओके, राइट। जी जी महाराज। अच्छा, अब आ जाइए देवाशीष, आ जाओ देवाशीष। प्रणाम महाराज जी। हाँ, महाराज जी your हाँ। questions anyway, you just proceed. Question number 1, page 175. Kindly explain. In the beginning, the aspirant has to take the help of imagination. Later on, when he becomes spiritually awakened, he will feel the presence of the divine. Now, my question is, kindly explain the state when an aspirant feels the presence of the divine. ऐसा है, you know, your question answers are, these questions are on all asking for explanation. These are not questions. Your explanation is very difficult. Now, when your second, what your question is that when, how, what? Read out the Yeah. last portion. Yeah, Last portion. when an aspirant feels the presence of the divine. So, what you said, kindly explain. हाँ, शुरू में मैं बताया कि kindly explain the state when an aspirant feels the presence of the divine. हो सकता है क्वेश्चन में फॉर्म करने में थोड़ा गड़बड़ है। No, लेकिन मैं तुमको पूछता हूँ, you say आपने रसगुल्ला खाया है ना? हाँ। Kindly explain how रसगुल्ला tastes. अच्छा, you have to experience yourself. ठीक है महाराज जी, समझ गया। You cannot answer. How can I explain to you how it is divine is experience? You have to experience yourself. It is like rasgulla, eating rasgulla. You cannot describe it. जी महाराज, Okay? जी महाराज जी। सेकेंड वाला, what is the highest spiritual vision and coming face to face with the truth? Again, the same problem. अच्छा, okay. The world of someone has described Taj Mahal. You have your imagination. When you go and see actually Taj Mahal, then you know you actually face to face with truth. महाराज जी, पहले तो सुनना भी जरूरी है ना, किसी का कोई भी सुनिए चीज। ना, सुनिए इसके बाद जो है एक्सपीरियंस जो है, हाउ डू यू एक्सपीरियंस द ट्रूथ? यू विल एक्सपीरियंस, देन यू विल नो। सुनना तो है ही, हम लोग सुनना ही तो कर रहे हैं। जी महाराज जी, जी महाराज जी। थर्ड वाला, थर्ड में the world of matter appears to be a shadow. Is it that the world appears to be false? The world of matter appears to be a shadow. Is it that this world appears to be false? Yes. जैसे मिराज. Have you seen any mirage any time? Yes महाराज जी. No. It appears to be real. But actually it is not. So when you do sadhana, this world will appear like mirage. अच्छा, It will appear, लेकिन you will know that it is mithya, unreal. जी महाराज जी। Now fourth इसमें है, what is a Sarvikalpa Samadhi? What happens to the mind in Sarvikalpa Samadhi? What does Again the same. What does a sadhaka sees in Sarvikalpa Samadhi? अच्छा, अभी टेक्स्ट में हम लोग देखा कि the world is unreal. This is Sarvikalpa Samadhi महाराज जी. Is it? Listen, again the same problem. Oh. We cannot even meditate well. Sarvikal Samadhi again, unless you experience, you cannot know it. It is very high experience. Again, I say it is like eating the laddu yourself. How can you describe it? जी महाराज जी। The second question, and the last one is also something like Nirvikalpa Samadhi, nothing seen and nothing to be heard. Maybe what happens to the mind? What happens to the mind in Nirvikalpa Samadhi?
Can a sadhaka come back from the infinity to his human body after Nirvikalpa? ये भी वैसा ही है महाराज जी. Then you have got after 5 there is some other more issues, more different questions are there. हाँ महाराज जी, मैं एक चीज इसमें सिलसिले में पूछना चाहता हूँ. ये जो that लीला प्रसंग we read, that divine play of Sri Ramakrishna, it has been written by Swami Saradananda Ji Maharaj. Now, if he has not gone through this state of Nirvikalpa and Sabikalpa, he cannot write the feelings of Bhavamukh, all these intricate things of Sri Ramakrishna. That means the person who is writing the book that means he has to pass through the states of Sri Ramakrishna himself, what he has passed through. Is it true? Have you not read it? Swami Saradananda Yes, Ji has written. I have Yes. nothing written which I have not experienced. Saradananda Ji has himself told this. Yes, Maharaj ji. Yes, जी Maharaj ji. जी He Maharaj जी. himself has पढ़ा. told it. Yes, हाँ. Maharaj ji. पढ़ा हूँ Maharaj जी. हाँ. Okay, next question. मैं जी Maharaj जी पढ़ा हूँ मैं. Next question जा रहा हूँ. 176. Sri Ramakrishna's illustration to explain the highest state of spiritual realization with 10 pots full of water, the sun reflected in each one of them. So my question is that we are practicing spiritual practices at the okay. First observe. हाँ महाराज जी, ये क्वेश्चन में मैं थोड़ा समझना चाहता था कि ये पॉट्स के बारे में जो श्री रामकृष्ण बताए हैं, these pots are nothing but human souls. महाराज जी, मेरा एक ही क्वेश्चन है इसमें कि ये जो श्री रामकृष्ण has given the explain this highest state of spiritual realization with 10 pots full of water, the sun reflected in each one of them, and after that he starts breaking one by one. The last one he breaks, and after that he says that if the reflected sun is not there, then who will see the real sun? Something like that. ये थोड़ा समझाइए सर प्लीज. ऐसा है कि जब लास्ट पॉट चला गया तो क्या है? कैन यू डिस्क्राइब? नथिंग कैन बी डिस्क्राइब. सन कैन नॉट बी डिस्क्राइब. तो भगवत साक्षात्कार के लिए यू हैव टू हैव ए माइंड, वन माइंड, सो यू आर एबल टू रियलाइज द ब्रह्मन. But once your Brahman is realized, then that pot is spoken, that is broken, then you become one with it. Who will going to describe? You cannot describe. Oh, you thank know, you, Maharaj. first there are 8 pots are there. So how many sons are there? 8. One original son and eight sons. So 9 Yes, sons. When one pot is there, so how many sons are there? One is the top son and another is the reflected son. Yes, And when Maharaj. that last pot is broken, how many sons are there? You will No say one can one see. son. No. You will say one son. No. Because there is no one reflector. So Yes. when the highest realization takes place, you cannot say that there is one Brahman. You become one with Brahman. You cannot say anything. You keep quiet. That So, is the idea. अच्छा महाराज जी, ये जो रिफ्लेक्टेड सन दिखा रहा है पॉट में, वो क्या सोल है? We are the Mind. Here, individual mind in which it is reflected. अच्छा. And in Nirvikalpa Samadhi, that mind merges in Brahman. So who will describe it? No one is there to describe it. Keep quiet. जी महाराज जी. जी महाराज जी. Okay, thank you महाराज जी. Next question भी जा रहा हूँ मैं. We are practicing spiritual practices at the heart center. Now the passage says, as a result of sadhana, one is able to locate the heart center and other centers where meditation is practiced. That means हम लोग जो heart center में we are practicing sadhana, but after sadhana you again realize that heart is the real. Actually, Abhi, just now it is an imagination.
अच्छा है ना। इमेजिन किया कि हमारा शरीर बॉडी जो है वो चेस्ट जो है वो खाली है, उसमें स्पेस है, उसमें एक लोटस है और लोटस के ऊपर एक मैं अपने इष्ट का ध्यान कर रहा हूँ। तो ये जी हुआ महाराज। एक हृदय कमल बना लिया। ये हमें अभी मैं इमेजिनेशन से कर रहा हूँ। एक स्टेट महाराज। ऐसी आएगी तुम एक्चुअली फील करोगे अपने हार्ट से। Oh, oh, thank you, Maharaj. Thank you. For question number 4 में है, my question is, we want peace and bliss in our life, but in higher spiritual life, there is neither peace nor bliss. तो the bliss that we speak of, इसमें text में दिया हुआ है, the bliss that we speak of is only a help during the period of sadhana. The boat stands in need of a favorable wind so long as it has not reached its destination. तो मेरा क्वेश्चन है कि ये जो पीस और ब्लिस तो हमें मिलने के लिए तो हम लोग कितना मेहनत कर रहे हैं कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस। ना ना, दिस पीस एंड ब्लिस इज दिस ओनली, हाँ ये बिगिनिंग में है, लेकिन when that experience is there you will get into actual peace and bliss. अभी तो क्या reflected peace and bliss है। Oh. You will practice it and then you will understand. जी महाराज जी। क्वेश्चन नंबर 5 में जाते हैं। In the course of mental evolution, the experience the mind acquires is not lost. It remains in the mind as memory. My question is, what to do when you are not feeling to do external worship and inclined to do japam and then meditation? The deities have been worshipped daily for years and we have to continue with it with the same. Kindly advise. ऐसा है कि as you proceed in spiritual practice, gradually your mind becomes more quiet. You go from external worship to mental worship. So proceed it, go ahead, and then whenever you proceeded, still you don't give up the external worship. Oh. थोड़ा सा पूजा कर लो, बाहर की पूजा कर लो. Let the photo will be there. Earlier you used to take half an hour or 45 minutes. At least 5 minutes you do. Put a flower, put incense stick, a little 5 minutes external worship must be done. It should not be completely given. Thank you, Maharaj. Thank you. Next question में है 173 page में है. Why is it so that it is easier to sit in a circle of burning fire than to keep the passions under control and not to allow them to make impressions upon the mind? That is real tapasya. What to do so that passions do not make impressions on the mind? No, the point is वो तो example किया है कि living in the passions के बीच में, to remain in passions के बीच में is like living in fire, as if fire everywhere is there. So in that, if you have got so many passions, you will be living in fire. That is the way this is being told. So try to get over the passions. It is only said as a difficulty. Now what to do? Remain away from desires. Don't get into sense objects. Don't remain completely world in Bhagwan, in the sansar. Sansar means in the world only there are sense objects and attachments and attractions are there. So be very careful, remain away from them. Do satsang, do swadhyay. This is very practical, very important. We are constantly living in the world, constantly exposing ourselves to sense and desires. The passions will definitely increase. जी महाराज जी, जी महाराज जी। नेक्स्ट में जाते हैं। What is meant by it is not desirable to give expressions to what, ये तो हो गया inner feelings, अभी इतने को बताया, हो गया। नेक्स्ट में जाता है which kind of japa is more helpful, beneficial to spiritual progress? Mental japa without moving even the tongue, or ordinary japa one has to utter the mantra? कौन सा superior है, helpful है, beneficial? That depends upon the individual. But if mind is restless, external japa or internal japa, nothing will be useful.
You know, japa has to be done with concentration, whether it is mental japa or external japa. Be with full concentration. There is no choice between the two, depending upon how your mind is concentrated or not. If the mind is concentrated, there is no difference. जी महाराज जी जी महाराज जी now next question में जाता हूँ मैं question number 9 page 176 how will you know that there is the real sun unless the अच्छा नहीं हो गया ये question 10 नंबर जाता है we visit sadhus at Ramakrishna ashram and offer our pranami and give some offer our pranam and give some pranami. What benefits do we get by doing this? Does it help in our spiritual practice? ये क्या question है? What sort of question is this? नहीं महाराज जी ऐसा हुआ है कि ये तो this has nothing to do with spirituality. It is a social custom. ओहो हाँ, थैंक यू ये साधु है तो साधु को प्रणाम करना चाहिए, साधु को प्रणाम करना चाहिए, प्रणाम ही देना चाहिए. ये सोशल कस्टम है. It has nothing to do with spiritual. ना कोई ऐसा है कि उन्होंने कुछ ट्रांसमिट करते हैं, उन्हें कुछ देते हैं? ना कुछ नहीं. आपने प्रणाम किया है, your courtesy is there, that's all. एक कस्टम है, सोशल कस्टम है. सीनियर लोग है, अगर फादर होंगे तो वे टच द फीट ऑफ द फादर, isn't it? हाँ वो महाराज जी वो ठीक है, लेकिन साधु का अगर छूना स्पर्श करना वो भी तो कोई होली चीज होता है, पवित्र होता है. हाँ तो ठीक है, that's all right. वही मैं पूछा है. Why? No, don't give much importance to it. That is all right. Nothing will. How much of spirituality will come because of touching them? ओहो Just a little spiritual touching them and a lot of spirituality. These are all. I mean, that is a custom we have been made. That's all. Oh, it's very good. You touch, take the blessings. Oh, Hamesha throughout our life you are taking the blessings of sadhu. I don't know what happens about it. Whether this helps it or not. Does it help? I don't know. It's like blessing. That's all. महाराज जी अभी नेक्स्ट क्वेश्चन है. वैसे more important is sadhu sangha. Only touching feet nahi, sadhu sangha is more important. Remain in the company, holy company of sadhu. Their vibrations will help you. हाँ जी महाराज जी महाराज जी नेक्स्ट में है we do not get a chance to observe their lives and receive instructions, but by reading reminiscences of great men, 16 disciples and old prachin sadhus, we get a glimpse of it. Can it be said as receiving instructions from the holy company? It's good. It is as good as that. Reading satsang, you are reading the reminiscences of sadhu, senior sadhu. We are reading Brahmananji's. This is very helpful. अच्छा. तो ये same as getting instructions from them? Instructions from them. Is it same as? Yes. Okay. Thank you, Maharaji. The great barrier that obstruct your correct vision of God is the doubts and confusions in your mind. What are these doubts and confusions, Maharaji? Which you are asking every day is every week are doubts and confusion. Okay, thank you, Maharaji. Thank you, Maharaji. Thank you, Maharaji. So, these two questions are Subir Majumdar. Maharaji. एक सेकंड महाराज, जस्ट 1 सेकंड. महाराज जी पहला सवाल है ऑन पेज 177 फर्स्ट पैराग्राफ. Swami Brahmananda is saying the Guru appears before the disciple in his spiritual vision. Then pointing out the Ishta, he further says, look, there is your Ishta. And now when he says that, is this the Diksha Guru that Swami Brahmananda is talking about? Yes. Who is? Okay. The Guru that appears before the disciple and points out the Ishta, वो Diksha Guru है. Diksha Guru. Right. Diksha Guru. Maharaj, next question, same page में है.
in the last paragraph, Swami Brahmananda says, in the higher spiritual state, there is neither bliss nor sorrow, pain nor pleasure, existence or non-existence. He uses the word higher, not highest. Now, if there is no bliss in that state, what makes the aspirant stay in that state? अच्छा ये बताइए, you are leading a family life. Ji. Look, are you living constantly in bliss? No. No, no bliss, no bliss, and still living a life. Ji, ji. So why make bliss as an issue? Acha. We have become sadhus. Right, Maharaj. So we are leading, we are not even enjoying the household life. Ji. Sometimes there is good food, sometimes bad food, we don't bother about it. Right. Not getting constantly elated meditation, deep meditation, not sometimes there is there, sometimes not there. But we are living a life, nicely living a life. Ji, ji. Why make Yes. it bliss as an issue? So bliss is not the highest state. No, no, no. Bliss, you become your real nature. You are always in nature. Your real nature. You So, have got your own personality. You have got an identity. Ji. That's all. When you bring bliss, it comes the question of mind. Acha. Huh. Okay. So when you go beyond the mind, there is no such thing as bliss. That is what you're Not a saying. question of beyond mind. You are in your real nature, Atman. Nature. Huh. Okay. Constantly you are there. No one bothers about these questions. Okay. Why do you bring bliss? Bliss at all. No one is bothering about this. Everyone is nicely living in the world. Mhm. Because we use the word Sat Chit Ananda. So जब Yes, you आनंद are आ at the जाता level है, of Sat. You are always at the level of Sat and Chit. हाँ Mhm. हाँ, लेकिन कहते हैं कि in the higher spiritual state. So when he says higher spiritual state, we are still in Sat. No. In the Samadhi state. तो नहीं महाराज ये Highest अच्छा higher बोल रहा है ना, highest नहीं बोल रहे ना. No, still. Highest. Okay. Higher और highest spiritual state की बात जब कहते हैं, तो वो then the समाधि है. question comes, how much bliss you are getting, less bliss or more bliss, etc. But we हाँ, are हाँ. otherwise always living. The question of that Sat, we are Sat living at the level of Sat and Chit. Right. So there is no midway. You are either in Sat or you are in Samadhi. Right, Maharaj. No. You are Sat Chit. You are always Sat Chit. Acha, we are always Satchit, we are not aware of it. Yes. It is no. We are always Satchit and we are always internally aware of it also. Only the Acha. question of bliss comes when you are हाँ. eating mango, we are eating हाँ. sweet, and we are जी. meditating. Then you have separate experience of bliss. Otherwise, it's not. Okay. As a Okay. matter of fact, why we are there? Satchidananda is the real nature, our nature. So Real I may nature, even हाँ. say, Oh, I अच्छा, may अच्छा. even say that because we are Satchidananda, we don't हाँ, bother हाँ. about it. We are always happy. Oh, अच्छा, अच्छा. Now it's clear. Now it's clear, Maharaj. महाराज Now I get. 15th चैप्टर गीता में सुख दुख द्वंद्व विमुक्ता सुख दुख संगई मतलब ना वो स्थित प्रज्ञ का वर्णन है. हाँ so the highest spiritual is like स्थित प्रज्ञ only, no? स्थित प्रज्ञ, गुणातीत, these are experiences. They are higher state. This Experience, is not the individual. Okay. महाराज जी एक सेकंड हाँ. महाराज जी जी, जी. ये ब्लिस का अर्थ ये होगा कि इट इज इनबॉर्न इन अस एज सून एज वी बॉर्न इट इज ए ब्लिस. हाँ. ना स्वरूप हमारा स्वरूप जो है ना भाई बेसिकली आत्मा ने सच्चित आनंद. जी. और जब हमारा मन शांत होता है, जब हमने लड्डू खाया तो हमारे लड्डू में ब्लिस नहीं होता. लड्डू में हमारे भीतर जो आत्मा है उसका जो ब्लिस है वो हमारे शांत मन में प्रकट हो जाता है. तो हम कहते हैं लड्डू खाने से हुआ, लेकिन हमारे भीतर जो आनंद है वही प्रकट हुआ. ओके राइट. स्वामी जी
Swamiji, for example, a poet, he gets bliss in sorrow. Huh? A poet, he writes poetry in sorrow. These ghazal singers, they get bliss in sorrow. See, When he's Definitely. under- a mother suffers a lot for the child. But it's a bliss. The Yes. mother suffers a lot, tremendous suffering, but there is joy in it. Yes. A poet also is describing his suffering and joy in it. Chalo. Maharaj. Swamiji, one small interruption. What is the difference between joy and bliss? Is the Oh, it is only a question of words. No, I don't go into the details of those. Maharaj, next question, for Maharaj. third. Subir. Next question. On page 178 in the last paragraph, Swami Brahmananda says there is yet another state of spiritual existence which is beyond both absolute and relative. What is that state? We know the absolute state, but what is beyond both absolute and relative? What does he mean by You know the absolute. You know the absolute. Tumne kaha hai, we know the absolute. Do you know theoretical? absolute? Theoretical Ah. ones. So this also beyond this state is also theoretical. How can you know मतलब it? ये- How can you describe it? Neti, Achha, not this, not this. It is like Thakur saying, or You are see, koto kichu ache. Only this Sri Ramakrishna, Brahmananji and Thakur, Uh-huh. such people only can say even Say. that there is a Ah. state beyond absolute. We don't know, Baba. We हाँ, cannot even. because जी. we In fact, cannot I even remember. conceive of. जी, Cannot even इसलिए he conceive. said, "Are koto kichu ache." When he said that there is so much more. हाँ, correct. Beyond everything. Right. Last question, Maharaj. On page 193, Swami Brahmananda says, then you will be able to depart from this world with a smiling face. My question is, what is meant by departing with a smiling face? Who is ready for such a state? He also said, finish all your duties and be ready for the great call. So there are two questions in this. Who is ready for such a state where he has to depart with a smiling face? Kya state hota hai? And what are these duties? He says, you have finished your duties. So pehle wala bata dijiye. Answer of first question is, the Ji. one who has become nirvasana, Ji. there is no attachments in the world. Ji. He is absolutely ready and go with smiling face. He has no attachments, no desires left. Chalo. We are जैसे बना रहे यहाँ पे है. We are ready for money करने का. हमारे कुछ बॉन्डेज ही नहीं है, प्रॉब्लम ही नहीं है. जी महाराज. तो ये जो duties. हाँ. Duties of your ashram. अच्छा. Duties of your ashram. Of the duties of the ashram. Maharaj, this state of nirvasana that you're talking about, is it the same state as the santhara that is done in Jainism, where they feel that they have nothing else to do or nothing else to achieve, or is it similar? वो तो क्या है कि वो that is imposed. Achha. That can also be done. That can also Achha. be done. Okay. So they basically decide that now it is time, I am becoming sick, I cannot live. So I give up everything. Okay. But even without, we must be prepared. Santhara mein kya hai कि वो तो they do fasting unto death. Death is being real. But here you need not do that. You constantly, I have no desires. You think about it. I am Atman. I have no desire. Chidananda Rupa Shivoham Shivoham. Meditate upon it gradually, and your mind will become ready for it. Ji. ठीक है महाराज. That's all, Maharaj ji.
प्रणाम महाराज। शिवानी, शिवानी, यस, प्रणाम महाराज। हाँ भाई। महाराज मेरा भी यही सेम क्वेश्चन था, आपने काफी हद तक इसका आंसर कर दिया। Now I'll start with my first question on page number 172. Swamiji used to say that a little awakening of the Kundalini is very dangerous until she rises up higher. So how to know about this? You know, we have done slight spiritual practice, slight concentration of mind, and many desires are there, not sufficient purity is there. If you concentrate your mind nicely, what will happen is your intensity of enjoyment will increase. Ji Maharaj. And then you are becoming more and more strong. And if a student is there and a student is told to concentrate, you get more marks, but in the enjoyment, desires for enjoyment also will increase. That is called. So Kundalini gets direct. Kundalini is spiritual, mental Shakti, psychic energy. And when you concentrate, practice sadhana, mental energy increases. And this will be directed to other directions towards Vasana. Okay. People are not, they cannot direct it towards spiritual. yes. Okay. So it's a double-edged sword. Double-edged, yes, different. Okay, right. Second question तुम्हारा ऐसे था, how to know it, isn't it? Ji. Your mind will become restless. Okay. You will be more interested in worldly things. You may start so many things you want to do. This I will do, that I will do. I will teach the students. I will get a more good college. All that sort of things will come. Or plans will start coming in your mind. The my energy, tremendous energy is there, psychic energy, Kundalini, Jagran ho gaya hai, and is all directed towards external things. You get tremendous energy to do this. Okay. Is that question clear तुम्हारा? That is first question. हाँ महाराज, एक छोटा सा डाउट रह गया कि अगर ये चीज हो रही है तो इसमें फिर डेंजरस क्या है? This is good. No, then you go to the external world, worldly दृष्टि से चलेगा, spiritually तो use हुआ नहीं ना उसका. अच्छा, ठीक है महाराज, spiritually use नहीं हुआ. ठीक है। तो उसको स्पिरिचुअली यूज करने के लिए क्या कर सकते हैं? उस एनर्जी को स्पिरिचुअली यूज करने के लिए फिर क्या करना चाहिए? अपने डिजायर्स को बंद करना पड़ेगा. प्लान करो, बहुत सारे प्लान, एक्सटर्नल प्लान्स को बंद करना पड़ेगा. ओके. अरे भाई, हम भी साधु हैं तो हम ध्यान करते हैं तो इच्छा लगती है कि आर्टिकल ज्यादा लिखूं, प्रवचन करूं. अरे आर्टिकल लिखूंगा, नागपुर मठ से पब्लिश हो जाएगा. So many articles, a book can be formed, मेरे नाम की किताब छप जाएगी. तो ये क्या हुआ? The mind जो है वो एक्सटर्नल, सारी एनर्जी जो है वो एक्सटर्नल रूप में चली गई. Maharaj, That is why it is not so easy. Nicely concentrated mind, spiritual energy, ये कुंडलिनी जागृत हो जाती है, शक्ति जागृत हो जाती है, और उसको प्योरली स्पिरिचुअल लाइफ में डायरेक्ट करना बहुत कठिन होता है. हाँ, पर ये है कि हमें करना चाहिए, उसी तरफ करना चाहिए. You mean to say this? उसी करना चाहिए. अब देखो ना, रामकृष्ण मिशन का कितना एक्सपांशन हो रहा है, कितनी एक्टिविटीज हो रही है. बुलेटिन आता है हमारे पास में, देखते हैं इतनी एक्टिविटीज हो रही है, क्योंकि यहाँ पे इतने साधु लोग हैं, उनका एक्सटर्नल वेस्टेज तो हो नहीं रहा एनर्जी का. कॉन्सेंट्रेटेड एनर्जी हो रही है, लेकिन कितनी एनर्जी स्पिरिचुअल एडवांसमेंट के लिए हो रही है, कहना मुश्किल. ठीक है महाराज. हाँ, निवेदिता जी, आप कुछ पूछ रहे थे? मैं पूछूं नेक्स्ट क्वेश्चन? हाँ, पूछो. महाराज जी, इसका मतलब कुंडली जागरण इज ए डबल एजेड सोर्ड. यस, यानी अरे डबल एजेड सोर्ड क्यों बोलो? इट इज अ स्वॉर्ड. अच्छा.
और मल्टी एजेड स्वॉर्ड है, उसको आप किसी भी तरह यूज करो। हाँ हाँ, वो तो एनर्जी है। जी जी। ठीक है महाराज। हाँ। हाँ महाराज, सेकंड क्वेश्चन है पेज नंबर 189. It is only when a man has made some progress in the spiritual path he can retire into solitude without danger. Why and what kind of danger? अरे एकांत में, वही जो ऑलरेडी रिटन देयर, यू विल गो मैड, यू आर नॉट हैबिचुएटेड टू रिमेन अलोन। But Maharaj, in my case, I'm happy with this and Because- moreover because- utilizing this time. because for you have not to live for a long time in solitude. long time. Okay. For 1 week is all right. For 2 days is all right. If you have to live long, you will have so many activities you will start preparing, doing. And if you don't meet with people, you will go mad. And I know there are some people who try to do it. एक दिन I used to go to Gazipur and live in solitude. So that fellow also, he said, I'll go and live in solitude for 1 week. And he lost his brain. वहां तो कुछ नहीं, किसी से बात करने का नहीं है, एकदम एकांत है, और उसको पढ़ने की लिखने की हैबिट भी नहीं है, तो पागल हो गया। अच्छा। बाकी महाराज लास्ट क्वेश्चन। Also, when you go alone, the lust also increases. And there are so many stories about people, sadhus falling down, getting lost. जी महाराज एक कलीग को ले जाकर रहना ठीक है ना? लास्ट टाइम बताया सेम मेंटल स्टेटस का है। हाँ, शुरू में यही बोलते हैं, डोंट गो अलोन, हैव वन फ्रेंड विद यू। हाँ, ये इसको हेल्प करेंगे, वो इसको help महाराज लास्ट क्वेश्चन, वो सुबीर जी का जो क्वेश्चन था महाराज मेरा मेरा एक छोटा सेम ही प्रश्न था। है। महाराज मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहती हूँ। पहले भी ये हो जान दो ना, अभी चल रहा है। अच्छा ठीक है। महाराज लास्ट क्वेश्चन था, फिनिश ऑल योर ड्यूटीज हियर एंड बी एवर रेडी फॉर द ग्रेट कॉल, बट ड्यूटीज नेवर गेट फिनिश, व्हाट काइंड ऑफ ड्यूटीज हियर? तो आपने बता दिया वो आश्रम, गृहस्थ आश्रम है या किसी का जो भी आश्रम में रह रहे हैं वो वाली ड्यूटीज। तो दैट्स ऑल महाराज। वो मैंने बता दिया था, योर ड्यूटीज एज अ हाउस होल्डर, डॉटर, टीचर, एटसेट्रा एटसेट्रा। और ये जो बता है ना, दिस इज फॉर मेंटली रिटायर्ड पीपल। Okay. Otherwise, when your daily duties का है, when you sleep peacefully, that you have done your daily duties. That is a different thing. यहाँ तो daily duty की बात नहीं हो रही है, ये तो when you are ultimately going to retire, you should feel that I have done my duty. हो गया, डिस्कस हो चुका है। जी हाँ, महाराज। ये तो what are you going to ask? ये तो महाराज मैं चलिए ये प्रश्न पूछना चाहती हूँ कि अगर किसी का बहुत भगवान में भी मतलब भगवान पूजा के लिए नहीं, भगवान में प्यार है और बाहर का काम भी कर रहा है, तो उसमें उसका भी क्या कुंडलिनी जागृत हुआ है या नहीं? अरे भगवान को प्यार करने के लिए कुंडलिनी जागरण की क्या जरूरत है? अच्छा कुछ नहीं। अच्छा ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा चलो भाई, दिलीप भाई, दिलीप शाह। हाँ प्रणाम महाराज जी, प्रणाम। My first question on page number 173. Whenever evil thoughts crop up in your mind, drive them out. Maharaj ji, how? What is the procedure? हाँ, पहला है, दो कई प्रकार के उपाय हैं, so many methods are there. जी। उसके अराउज गुड, अच्छे थॉट्स मन में लाने का कोशिश करो। डोंट थिंक इविल, ये प्रैक्टिस करो। जी। थिंक ऑफ देयर बैड इफेक्ट्स, ये करेंगे तो बहुत बुरा होगा, भयानक होने वाला इफेक्ट, उसको सोचो। अगर एक पर्टिकुलर प्लेस में हो, संसार में हो, और वहां पे बहुत वातावरण वो संसारी वो है, बिजनेस है, जो भी हो खराब है, उस स्थान को छोड़ दो। होली कंपनी सत्संग में चले जाओ।
Oh, very good. उसी बात कोई किताब रख लो, नोबल किताब, अच्छी किताब लेके पढ़ने लग जाओ, जी या फिर राइटिंग करने लग जाओ। तो ले लो और कुछ किताब में से गीता के श्लोक है, उसका मीनिंग जो है वो कागज में रखने का, लिखने का प्रयोग करना चालू कर दिया ना। और और या फिर दूसरे काम में लग जाओ, लेकिन उससे तत्काल मन को अभी हटा लो। इस प्रकार से कितने उपाय बता दिए। ये बहुत बहुत अच्छा महाराज जी। अच्छा, सेकंड क्वेश्चन तो हो गया है, हितू जी ने क्लियर कर दिया था। It is not desirable to give expressions to our inner feeling. For that ठीक है। lesson the necessity of love हो हाँ। गया। Now we come to page number 175, question number 3. The definition of nirvikalpa samadhi. There is then the realization of that which is beyond thought and speech. In this state, there is nothing to be seen, nothing to be heard. Everything is lost in the infinite. Maharaj ji, my question is then what? Huh? Then what? Then यदि what? ये- हाँ, then what? ये जैसे कह रहे हैं, मुक्ति। Then what means mukti? no, there is then the realization of that which is beyond thought and speech. In this state, there is nothing to be seen, nothing to be heard. Everything is lost in the infinite. Then ये मुक्ति की स्टेट आ जाएगी। हाँ, ये मुक्ति की स्टेट है। ओके जी, हाँ। राइट जी जी। महाराज जी, इसको हम थोड़े समय के लिए भी क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं वैसा? अरे छोड़ो यार, बाद में नहीं, अगले नहीं। देखा जाएगा, अगले जन्म में कभी होगा तब देखेंगे। अभी कहाँ इतनी चिंता करते हो। ओके, ये महाराज जी आपसे नहीं, पर आप ऊपर से आशीर्वाद देना, मुलाकात नहीं कर पाएंगे क्योंकि आपको तो चलो। मुक्ति मिल जाएगी, आपको तो मुक्ति मिल जाएगी, तो हम कहाँ ढूंढने बैठे। चलो चलो आगे चलो। महाराज सुनिए ना, हम लोग जैसे ये थॉट्स आते हैं उसका अगेंस्ट में आप बोल रहे हैं ना अच्छे थॉट्स लाइए, तो मैं जब गीता के श्लोक याद करती हूँ थोड़े थोड़े देर के बाद फिर टेंशन हो जाता है कि वो याद हो रहा है कि नहीं, आ रहा है कि नहीं, तो उसमें क्या करना चाहिए? अरे भाई, प्रैक्टिकल। अगर तुमको अच्छे थॉट्स में भी टेंशन होता है, तब मैं क्या हाँ, बताऊंगा। तो उसको कैसे हैंडल करने का है? ये मेरे बस की बात नहीं है। तो गीता के श्लोक को हिंदी बंगाली करके पढ़ो, और क्या करोगे। अच्छा, ओके। महाराज जी, पेज नंबर 185, please tell me how to worship the Guru. The reply given in the article, I tried even for a minute, but I failed. Please guide me what to do. ऐसा है कि उसके लिए गुरु को क्या करना है, गुरु की पूजा क्या करना है। हाँ, how to worship Guru. वर्शिप, ये मानसिक पूजा बोलते हैं इसको। जी तुमने बाहर कभी पूजा की है? हाँ, बाहर तो पूजा की है। हाँ, बस तो मन में बैठ के मन में पूजा करो। अच्छा, गुरु की कल्पना करो मन में, और मनी मन उसको फूल दो, मनी मन अगरबत्ती जलाओ, मनी मन दीपक जलाओ। अच्छा, एक कल्पना में रहना है। हाँ और उसके बाद बाहर भी अगर कोई फोटो रख लिया और उसकी पूजा हाँ। कर ली, ये भी कर ओके। सकते हो। जी जी, राइट। महाराज जी, मानसिक पूजा तो हमारी चलती रहती है, सोचते रहते हैं हम हर बार। हाँ, तो आपका फिर प्रश्न क्या हुआ? ये तो गुरु नहीं। की पूजा हो गई। अच्छा, पर मानसिक पूजा के लिए भी क्या हमें एक जगह बैठ के कुछ समय निकालना आवश्यक हाँ है या? हाँ, थोड़ा तो करना चाहिए ना, नहीं तो क्या चलते फिरते पढ़ना एक बात होती है, वो दूसरी चीज होती है। ओके। अब गुरु की पूजा करना चाहते हो ना, हाँ तो पूरी या तो फोटो में पढ़ो पूजा की, गुरु में पूजा करो, या हृदय में करो, लेकिन बैठ के ही तो करोगे पूजा, चलते फिरते तो नहीं होगी। और चलते फिरते दूसरी चीज होती है फिर। ओके, राइट जी जी। महाराज महाराज, गुरु की पूजा हम लोग हमेशा जानते हैं कि सहस्त्रार में करना चाहिए, यहाँ महाराज बता रहे हृदय में। हाँ, गुरु के शास्त्र जब अब जैसा भी हो, वो हाँ। स्थान ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अच्छा, बाहर करो या सहस्त्रार में करो। सहस्त्रार में इसलिए ना, प्रारंभिक साधक को
कहीं ना कहीं बताना है ना, हृदय में अगर इष्ट बना दिया तो गुरु हाँ। कहाँ बताओगे? प्रहट। हाँ, इसलिए सहस्त्र। अच्छा, महाराज जी सहस्त्रार- महाराज जी गुरु का जो इंस्ट्रक्शन है उसको फॉलो करना भी एक उनका पूजा के बराबर नहीं होता। वाह, बिल्कुल, बहुत बढ़िया है, वेरी गुड सजेशन। गुरु की पूजा, गुरु के जो उपदेश है उनको जीवन में उतारना गुरु की सबसे अच्छी पूजा हुई दिलीप भाई, ये बहुत जी, बढ़िया बिल्कुल। बात कही है। जी, हाँ। बहुत जी महाराज जी। नाउ माय होली कंपनी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, पेज 186। महाराज जी, हाउ क्रिएट फेथ इन साधु from whom we get instructions and clear doubts? क्या बोला? Maharaj ji, my question is how to create faith in sadhu from whom we get instruction and clear doubts. हाँ, तो क्या चाहते हो उसमें? उसको जीवन में नहीं, उतारो। नहीं है, ये बराबर है, पर साधु के प्रति पहले तो फेथ आना चाहिए, तभी तो हम इनके इंस्ट्रक्शंस और डाउट्स क्लियर करेंगे। तो साधु के प्रति फेथ कैसे आएगा, ये मेरा सवाल है। जस्ट वी आर वॉकिंग ऑन द रोड, वी कैन नॉट हैव उसकी कोई ट्रेनिंग है, इंस्ट्रक्शंस है? नहीं, ये कोई मेरा, ट्रेनिंग नहीं है, कोई ट्रेनिंग नहीं है। यदि मैं एक बच्चे को या मेरे बेटे को यह कह दूं कि तेरे को साधु के प्रति श्रद्धा होना चाहिए और उनसे तू तेरे डाउट्स क्लियर कर, तो वो कैसे इसको समझ लेगा? वो पापा ने बोला है, पापा ने बोला है कि साधु में श्रद्धा होनी चाहिए, इसलिए मैं श्रद्धा करता हूँ। ओके, इट इज टू बी टेकन टू बी ग्रांटेड में जाना पड़ेगा। यस यस यस, श्रद्धा जो है वो टेकन फॉर ग्रांटेड ही होती है। जी, ओके, राइट राइट महाराज जी। नाउ माय सेकंड क्वेश्चन, पेज नंबर 187। He must try to realize what he learns from them. What to realize? Further, in the same first para, last 3 lines, only brahmacharya can lead us. Am I correct? नो नो नो, यू रियलाइज व्हाट यू हैव लर्न। उसको क्या करना है? साधना के द्वारा। हाँ, गॉड भगवान है, सोल है, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है, ये सारी की सारी जो बातें हैं उनको आपको समझ लेना चाहिए। क्या है तुम्हारा क्वेश्चन? he must try to realize what he learns from them. ये मेरा क्वेश्चन है, पेज नंबर 187 पे। महाराज जी, ये फर्स्ट पैराग्राफ है। A beginner should sit beside holy men and listen to them with profound attention and retain their words of counsel in his memory. But it must not end there. He must try to realize what he learns from them. हाँ, जो तुमने आपको सुना है, पढ़ा है, उसको जीवन में उतारने का प्रयत्न करो। बराबर, इसको ट्राई कर। अब इसके लिए बस। नीचे लिखा हुआ है, if you have the desire to turn your mind to God and realize him, your sadhana must go hand in hand with brahmacharya. ब्रह्मचर्य के साधना के साथ में संयम बहुत देना चाहिए। याद रखो, सारी साधना का आधार है संयम। और ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल सेक्स कंट्रोल नहीं है, वो जिह्वा का भी कंट्रोल है, नेत्र का भी कंट्रोल है, 5 इंद्रियों का कंट्रोल है। बिना संयम के कोई साधना नहीं होती, इसलिए कहा इसको कि ब्रह्मचर्य आवश्यक। जी, बराबर, जी 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 महाराज। On the same page 187, last 2 lines, no one can catch the spirit of the scriptures. Maharaj ji, a literate person knows and understands scriptures, and when he hears from sadhu and mahatmas in the satsang, in isolation or in a company of few or in a auditorium premises in a full capacity, after all, what is that? Is it भैंस के आगे बीन बजाना है क्या? Because in the last 2 lines of the page 187 and the first 2 lines of page 188, the word says differs. What is differs? डिफर वर्ड्स का मतलब क्या है? डिफर का मतलब है वह उससे भिन्न है। 3 प्रकार के ज्ञान हुए। वर्ड वहां पे देखो जी, एक दूसरे से भिन्न है।
Yes, it's डिफर quite- 3 प्रकार के ज्ञान हैं, पढ़ो तो जी 2-3 हाँ, भिन्न हैं। जी the डिफर knowledge का of अर्थ God, भिन्न होता है। जी तुमने एक्चुअली एक्सपीरियंस किया वो एक चीज है, जी तुमने केवल सुना है वो दूसरी चीज है, हाँ यस और कुछ जो तुमने मन ही मन सोचा है वो 3 चीजें है, भिन्न भिन्न हैं। हाँ 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 यहाँ यही बता रहे हैं कि दे डिफर। इसलिए कहते हैं बीन बजाना, तुमने जो बताया है, हाँ, केवल भैंस के हमने आगे सुना है, यानी भैंस के आगे बीन बनाया। तुमने कुछ हाँ पढ़ा है, तुमने जीवन में उतरा नहीं है, ये भैंस के आगे बीन बजाना, हाँ ये समझ लो। ओके जी हाँ, तो ये 3 प्रैक्टिस इन्होंने बताई है। एक तो सुनना, हियर से इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम द एक्वायर्ड ऑफ प्रैक्टिसिंग साधना। सो साधना हाँ, इज ठीक है। डिफरेंट, हियर से इज डिफरेंट, एंड देयर इज अ थर्ड थिंग, रियलाइजेशन ऑफ गॉड। सो हाँ, देयर आर 3 लेवल हो गए। ये एक तो सुनना, अभी सुनना हो रहा है, हाँ उसके बाद साधना उसे करना पड़ेगा, जी और तीसरा अनुभूति होगी। ये 3 चीजें भिन्न है। तो अच्छा महाराज जी, यहाँ पे साधना का मीनिंग क्या होगा? नीति अभ्यास सुनने के अरे बाद जो कर... तुमने हमने तुमको अभी सुन लिया तुमने कि सत्य बोलना चाहिए, सत्य अच्छा है, हाँ और साधना का अर्थ है सत्य बोलना। ओके ओ राइट जी जी महाराज जी जी पेज 188 first paragraph, to earn fame, then to renounce it. This is the one sentence. To earn fame, then to renounce. Maharaji, my questions are, if you renounce fame, then why you allow fame to come in? किसको क्या किसको? महाराज जी, ये क्वेश्चन है, एक सेंटेंस है, फर्स्ट 188 पेज के फर्स्ट पैराग्राफ का सेकंड लाइन का है, टू अर्न फेम देन टू रिनाउंस इट। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अर्न क्या है? अर्न क्या है? फेमस को अर्न करो और फिर उसको छोड़ दो। नेम एंड फेम। नेम एंड फेम, फेम वाला फेम, बात। नेम एंड फेम। अच्छा, तो क्या Yes. बोल रहे हो? प्रश्न क्या है तो तुम्हारा? मेरा सवाल ये है कि हमको फेम अर्न करने की जरूरत ही क्या है कि उसको रिनाउंस करना पड़े? हाँ, जिन संसार में लोगों को फेम की इच्छा है ना, उन लोगों के लिए कहा गया है। जो लोग पूर्ण रूप से निष्काम है, वो नेम फेम की चिंता भी नहीं करते, अच्छा तो ऐसे लोगों के लिए कहा। हाँ अरे कि इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए, नाम यश प्राप्त कर तो सको। जी हाँ। महाराज जी वो महाराज जी वो 3 स्टेट के बाद में कह रहे थे ना, 3 टाइप्स ऑफ नॉलेज जो ठाकुर ने कहा है, दूध के बारे में सुनना, दूध को देखना और दूध को पी जाना, ये 3 उसको भी हम कह सकते हैं। कोई बोल। अच्छा महाराज जी, अब इसमें मेरा सेकंड क्वेश्चन है, यू गेट फेम इवन यू डोंट वांट एंड डू नॉट डू एनी एक्टिविटी एंड और गो इन एनी लोनली प्लेस एंड लिव देयर। महाराज जी, फेम तो ऑटोमेटिक कभी हमारे पे इम्पोज हो जाती है। ये महात्माओं के लिए है, नॉट फॉर वी पीपल। महात्मा लोनली रहते ही रहते, तो इससे भी उनके ऊपर इम्पोज हो जाती है। कितने बड़े महात्मा है, 30 दिन से अंडरग्राउंड है, तो इसका क्या करें? तो क्या है? फेम की बात है ना, मेरे पास वो ओरिजिनल नहीं है यहाँ पे। क्या है? इट इज रियल भक्ति भाव जब प्रकट होता है। उसके तुम्हारे 2 क्वेश्चन है, एक ये है, मेरे 3 क्वेश्चन है इसके। दिस मैन भाव। मेरा महाराज जी, मैं ये जो है ना, ये भाव की बात हो रही है, भाव की बात हो रही है। हाँ, व्हाट इज इट ओरिजिनल में? नाग फेम महाशय नहीं। की बात कर रहे हैं मैं। हाँ, नाग महाशय ऐसा कहा करते थे। क्या It कहते is थे? easier to earn fame than to renounce it. And Yeah, he yeah. who renounces, it is really a great man. He is really a great man. अच्छा, आगे पढ़ो। अच्छा, He उसके बाद है, also said, he also and- said, an anchored boat doesn't move forward. He Yes. meant that a man whose mind is deep rooted in the lust and greed cannot more move Godward अच्छा, ठीक है। unless unless he frees himself from the deluding influence through intense sadhana,
God and Hmm. pleasure seeking cannot go together. Hmm. If you want to one, you have to banish the other. ये पूरा पैराग्राफ है नागमास्टर। हाँ, तो तब जहाँ प्रश्न क्या हुआ? जहाँ है काम तहाँ नहीं राम। हाँ, प्रश्न क्या हुआ? हाँ महाराज जी, ये जो पहला प्रश्न का तो उत्तर मिल गया। दूसरा प्रश्न मेरा ये था कि यू गेट फेम इवन यू डू नॉट वांट टू, फिर भी फेम मिलती है तो रिनाउंस कैसे कर सकते हो? क्या And- कर आने दो, आने जैसे जिसको अगर फेम के अंदर आसक्ति नहीं है उसकी चिंता नहीं करेगा, क्या करना? हम्म। अच्छा, तो आगे ये जाए फेम, चलेगा, फिर क्या फर्क पड़ता है? आसक्ति नहीं होना चाहिए। तो हाँ। यस यस यस, तो महाराज जी इसका अर्थ ये हुआ कि फेम फेम आने से कोई तकलीफ नहीं है, पर उसमें आसक्ति नहीं होना चाहिए। हाँ हाँ, बस ठीक बात है। ये ओके। नाउ अब तीसरा सवाल भी देख लेते हैं महाराज जी इसका ही। Your good spiritual activities also bring fame sooner or later. It is not like close and throw it out and say, I have renounced the fame. Like you are decorated with award by some institution and you say, I do not want. Even if you do not do this, more new fame will come. यानी फेम वैसी चीज है कि जो जिसको छोड़ता है उसको बहुत ज्यादा मिलती है। तो वो अब चलो ना renounce- आगे चलो, प्रश्न क्या है उसमें? चलो प्रश्न क्या है, आगे चलो। तो बस तो इसको हमने मन से छोड़ देने का फेम को। हाँ हाँ, तो मन से छोड़ ही देना है। Okay, right. Now my next question, 189, last two lines. This friend would at times experience a kind of inspiration and lose all outward consciousness. People called it bhav. अच्छा, Maharaj ji, how we know bhav is not real? Secondly, if it is not real, then how is it whenever you have it, you seem to feel a great torment within? ये भी एक sentence है इसके अंदर। नहीं नहीं, ऐसा है कि जो भाव है ना, भक्ति भाव जो होता है ना, हाँ हमारे प्रेम भगवान के प्रति भक्ति भाव होता तो ठीक है, ये ट्रू है। जी, वो उस व्यक्ति को होता था तो वो फॉल्स था, वो दिखावा करता था। अच्छा, हाँ हाँ, इस आदमी में भाव जो था रियल नहीं था, वो उसको दिखावा जैसा करता था, उसको कष्ट बहुत होता था। जी, वो दिखावा तो कर, भाव की अच्छा चिंता मत करो मेरे भाई, भाव की चिंता मत करो, कोई पकड़ने वाला नहीं होगा तुम्हारे को, बड़ा मुश्किल हो जाएगा। ओके महाराज जी, लास्ट लाइन एक पढ़। Whenever you have it, you seem to feel a great torment within. Yes, हाँ। बताइए जी। नो बाबा, टॉर्मेंट है तो क्यों करना भाव? हमारे को तो सारा जीवन कभी भाव हुआ ही नहीं, सारे दिन की साधना कर। अच्छा, तो भाव होगा तो टॉर्मेंट होगा ही क्या? अब आप दूर रहो ना, उसको भाव की बात मत करो। और लोगों को देखोगे तुम नृत्य करते हैं, कीर्तन करते हैं, आंसू बहाते हैं, ऐसे दिखे कि नहीं तुमने? हाँ हाँ, रोज देखते हैं। हाँ, बस बस बस, उससे दूर रहना। Okay, right. Maharaj, now next question on page number 189 and 190. This time, no sooner had to taken his seat by the side of Swami, then the latter suddenly began to weep bitterly and then began to laugh. He was beside himself with madness of devotion. At this, the man said to himself, what I have learned today, 1,000 books could not have taught me. Maharaj ji, what type of experience he had which made him to weep bitterly and then begin to laugh? अब और ये ये भाई भाव- ये बहुत उच्च कोटि का भाव है, ये उच्च कोटि का भाव है। ये भगवान का अनुभूति होते ही प्रेम से गदगद हो गए। मैडनेस, प्रेम की पागलपन है, ये बहुत उच्च भाव चलेगा। हाँ, अच्छा जी, अच्छा। और महाराज जी, जब कोई हम सुनते हैं कहीं पे कुछ पढ़ते हैं और उस समय जो हम लोगों के आंख में आंसू आ जाते हैं, 2 मिनट के लिए भाव में बह जाते हैं, तो उसको किस स्टेज पे गिना जाएगा और वो तो क्या भैया है? मेरे को तो आज तक नहीं आया, तुमको आता है, मैं क्या जवाब दूं उसका? चलिए, हमको तो आता है महाराज जी। अच्छा, पेज भाई, नंबर हमको कभी आता ही 192। हमको कभी आता ही नहीं, कभी नहीं आया। महाराज जी, पेज नंबर 192। What one experiences dangers and difficulties in the path of sadhana? That is my last question. पेज नंबर 192 पे है। साधना में डेंजर्स है। There are डेंजर dangers. है, जब चलोगा ना ध्यान में कठिनाई होगी। जी, ध्यान में बैठोगे
हाँ थोड़ी देर बैठोगे ध्यान हो ही नहीं रहा है, हाँ हाथ पैर बिल्कुल हिलने लग जाएंगे, ये मन में बिल्कुल पता नहीं कितने फालतू विचार आने लग जाएंगे। हाँ, बिल्कुल तो ध्यान करो, साधना करो ना, तो इसे बहुत सारी कठिनाइयां, डेंजर्स आने लगे, हाँ तब पता चले। ये आ रही है। अब इसको भगाने के लिए भी तो इसके अंदर आगे नहीं लिखा है उसी लाइन में, डेंजर से हाँ, बताए। हाँ अब भगाएंगे कैसे? लिखा नहीं है नहीं वो। आप जब भैगा प्रॉब्लम होगा तो ब्रह्मेशानंद को एक ईमेल भेज देना, वो जवाब दे देगा, क्या करना। हाँ, prayer प्रणाम महाराज। चलो intention सतीश, सतीश हो, सतीश की नहीं है, सतीश वीक नहीं है, नहीं है। नहीं दिख रहे हैं, आज नहीं ज्वाइन किया सतीश ने। हाँ रीता, चलो रीता। Yes, Swamiji. हाँ My first question, part 1, chapter 3, spiritual practice, page 184. Here Sri Maharaj speaks of evil influences and how they shake balance of mind. He goes on to say, when the mind moves on to higher planes, no evil influence can reach there and agitate it. My question is how to lift the mind to higher planes while doing daily work and interacting with people. देखो भाई, you know there are no shortcuts. Yes. You know, first is there are many techniques. You know, if I tell you to do 20,000 japa Yes. per day, can you do it? Yes. Can Not you do now. it? No. Huh? It will take minimum, if the mantra is small है तो 8 घंटा Yes. लगेगा जप करने में. Yes, yes, Swamiji. But you have to take out time and do it. The second is continuous japa. This is, I said, by sitting in the place and doing japa 1 hour, the 3,000 japa in 1 hour. So that way, or continuously you have to japa while going about, you have to come to continuously japa. Yes. The third is example, I am giving some of the suggestions. You know, wear a locket. Thakur or someone's locket you wear. Your mind be Yes. permanently towards all that. the time. And then That I- while you are working, go on listening to the cassette. While you are preparing food, you go on listening to the cassette also. Yes, yes, Swamiji. Go on chanting yourself. Here one Swami was there. He was this was the secretary of the Advaita Ashrama or something. Yes. I have seen continuously wherever moving about, etc., he will go on chanting stotras. He remembered so many. Even when he was secretary, he was continuously chanting stotras. While moving about, going, while taking food a little time, otherwise continuously chanting stotras. Fourth is practice of presence of God. Think that God is with you. Yes. Continuously you have to think that God is with you. Then in between one work, make a deal japa. That is, suppose I used to do sometimes. I've seen one patient, then I will make a prayer. If there will be assistant in our shrine, our dispensary at Raipur, we had made a small shrine. Yes, So Swamiji. before start sitting on the doctor's seat, I will go and meditate. Yeah. And then after, in between 2-3 patients I have seen, I'll just go, please wait, and I'll go again. Maharaj, So- second, continuous japa for how much time? No, here her problem is that how to do a mental problem gentle. Continuous japa means day Always. and night. Japa is day and night. That's No, what. Okay. go. Yes, correct.
Acha, then you see, a mother is constantly, if the small baby is there, the mother does all the work, Yes, but her mind is always thinking of the baby, isn't it? yes, Similarly, you have to be love with God. If you love God, then like a lover or like a mother, you will always be, even busy you are constantly thinking of God. So I have given you so many suggestions. yes, Swamiji. Now, and after 1 week, you have to give up the follow-up. No, no, no. This will not do. You have to follow up. You will have to say, Yes, this much yes. I have practiced, this I have not practiced. This I could not do. That you have to do. Otherwise, this will be, what is the use? Now, this presence of God and the continuous japa, these Ah. two are going on reasonably well. Good. Then very good. Some others you can Swamiji? add if you want. Swamiji? Swamiji, Yes. can I? Swamiji, one useful thing is to put a tika at the Agnya. And never look at a person's eyes who's negative. While they're talking to you, don't look at the person's eyes who's negative. That's one of the effects by which you don't take in negative energy. Always keep the Agnya covered if you don't want to receive a negative influence. I don't know. This is tactical, this is a physical thing. I learned it from a Pandit. Second question. Second question, part 1, chapter 4, Holy Company, page 189. In answer to the disciples' question, Sri Maharaj says, true solitude can be felt only in Samadhi. Maharaj, we are far, far away from Samadhi. How can we get solitude in the mind? No, that is not practical. The physical, try to get physical solitude. Okay. Physical solitude, you can go inside in your room, close your room, etc. Yes, First is physical solitude. Second is mental solitude. Samadhi you cannot get, but these two solitudes you can get. Physical solitude and try to get mental solitude. How? Mental solitude? Quietly sit in the solitude, quietly sit and free the mind and think of God. That is the mental solitude. Okay. Third is pray to God to help. Your both the questions are interrelated. Yes, Swami. Okay. Chalo, Nivedita. Thank you, Swamiji. Thank you. महाराज पहला प्रश्न है who are fit for the sadhana of madhur bhav or sakhi bhav? Don't worry about that. Okay. You are not eligible. Acha. What is dvaita advaita vivarjita samadhi? You see, we again the same problem. Dvaita, advaita, beyond that. Absolute. How can we think about it? It's beyond thought even. Beyond. ये समझना, to understand is very difficult. थर्ड प्रश्न है हाउ टू लोकेट हार्ट सेंटर. हम लोग तो हार्ट में जप करते मतलब. Imagine I just not discuss हुआ. हाँ just तो discuss हुआ. Consider that chest is there. In chest, inside the chest there is heart. So in that you can imagine that area, chest is empty. चेस्ट में तो लंग्स है और हार्ट सब एक खाली करो और वहां सोचो कि वहां पे एक कमल है, लोटस है, वो हृदय कमल है, ऐसा सोचो. 8 पेटल 12 पेटल जैसा भी हो. और उसको ये इमेजिनेशन से शुरू करना है. हाँ, इमेजिनेशन. ठीक है. पेज नंबर 174, फोर्थ क्वेश्चन, पेज नंबर 179. ये पोर्शन समझ में नहीं है. इन मेडिटेशन when aware of God and himself, japa and prayer and like have no room there. Here. यहाँ पर जो है 179. They read out, read.
वहाँ आंसर एक दिया मिनट। गया। The next step is japa and prayer, in which हाँ। one sees the glory तो of the वो Lord. 4 स्टेप जो बताया मैंने डिस्कस किया। हाँ? 4 पे उत्तमो ब्रह्म सद्भावः, ध्यान यही बोल रहे हैं भावत्त मध्यमः, अच्छा अच्छा, मध्यमो वो तो समझ गए। अधमो भाव, जप स्तोत्र अधमो भावः, बाह्य पूजा अधमात्मा। ये अच्छा, पूरा ओके। पोर्शन जब पढ़ोगे ना तो हाँ। उसमें 4 प्रकार के लेवल दिए हैं साधना के। हाँ, सर्वश्रेष्ठ समझ है गए। ब्रह्म के साथ एक होके रहना। हम्म, उससे लोअर लेवल का है ध्यान करना, मेडिटेशन। हाँ, उससे नीचे का है स्तोत्र जप स्तोत्र करना, हाँ, और चौथा है बाहरी पूजा। ओके। और बस नीचे से इतने शुरू पे- करो, नीचे से शुरू करो। अब पहली है बाहरी पूजा, अभी हम बाहरी पूजा ही करते हैं, बाहर फोटो करो के फूल फूल चंदन इत्यादि चलाते हैं, ये बाहरी पूजा हुई। उसके बाद में स्तोत्र पाठ करते हैं, बाहरी पूजा के साथ भी कहते हैं जप जप करो, स्तोत्र करो, प्रार्थना करो। फिर कहते हैं कि बैठो ध्यान करो। तो ये 3 तो हम कर सकते हैं, ब्रह्म सद्भाव सबसे ऊंचा है। पर चारों मिक्स ही हो जाता है महाराज हम लोग के नहीं रूटीन नहीं, में। चारों जैसे तुमने पता नहीं पूजा पद्धति पढ़ी कि नहीं, पूजा पद्धति जो है ठाकुर की पूजा पद्धति, उसमें बाहरी पूजा करते हैं, उसके बाद में स्तोत्र पाठ बहुत सारा है, हाँ, और उसके बाद में ध्यान की बात भी कही गई है। तो जो रिचुअलिस्टिक वर्शिप पूजा हमारी है, जहाँ कहीं भी पूजा है, उसमें 3 पूजाएं ये एक साथ होती है। केवल मैंने फोटो लगा दिया और फूल चढ़ा दिया, अगरबत्ती जला दी, तिलक लगा दिया, दीपक जला दिया, ये नहीं होता। उसके साथ में आपको स्तोत्र पाठ करना पड़ेगा। जी। उसके बैठे कि नहीं अभी पढ़ो, अब 108 जप करो, तो ये दूसरे लेवल की पूजा हुई। उसके बाद आंख बंद करके अपने इष्ट का ध्यान करो। तो पूजा हमने बाहरी पूजा की थी, शुरू की थी, लेकिन उसके साथ में हमने स्तोत्र पाठ भी किया है, मानसिक पूजा तक आ गए हैं, ध्यान करो। और ब्रह्म सद्भाव जो है वो तो उसमें आप प्रतिष्ठित हो जाते हो, तब ब्रह्म सद्भाव, वो तो महाराज अनुभूति जी, है। महाराज जी, हाँ। can the fourth stage be practiced imaginarily, just like अब कर सकते ध्यान हो, वो भाव, तो सब? वो ध्यान ही तो हुआ, that becomes अच्छा, meditation. that is still meditation. That is still at the level of meditation. Meditation, okay. ब्रह्म सद्भाव जो है वो रियलाइजेशन। ठीक है महाराज, हो गया? बस हो गए। हाँ। शिवानी, ये अपने शिवानी नहीं, क्या है ये अपना, बोलो बोलो बोलो, मालिनी। Swamiji, they've emerged right now, so I'm asking you, how do you know that an experience is real? Should one divulge it to your guru? Whatever whatever, are you imagining, are you misunderstanding a certain thing that has happened? Should you divulge it? Yeah, so this is not divulging, it is asking Guru. Asking, okay. Okay, but Whether one should. is it correct, One is it should. true, what is it, what is the importance? It is a question Right. of asking. Fine, that we should do that, confirming. Okay. Second thing is about Savikalpa Samadhi. Swamiji, when one is working, suppose you're really absorbed in the work and you completely lose track of time for a very long period. Is that Samadhi? No. No. Okay. Okay. Another thing, Swamiji, this about practicing the presence of God. Huh? Now, very often, sometimes you feel a warmth in your heart. Huh? In your heart, you feel a warmth. Is that feeling the presence of God? Well, what do you mean by warm? If the warm temperature increases in your heart? No. You feel what do you mean by something garam in your heart. Here you feel some garam. Is that presence of God? You just feel garam. No. Presence No? of God, it has nothing to do with physical.
It is a mental situation. Okay. The heart becomes, you get a feeling that is not mental situation. Actually, you feel that there is your Ishta is there inside in your heart. But you feel him outside more than inside. That is all. That also is presence of God. Okay. Okay. Thank you, Swamiji. Thank you. Thank you. That's all. और कोई है? हाँ कोई नहीं है। अच्छा भाई, शुरू बंद करें। जी। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम तत्सत्। श्री राम कृष्ण अर्पणमस्तु।